बुक क्यों लेके जा रहे हो? फिर देख रहा था फिर एक किसी को करवा तो फिर बाद में आप डायरेक्ट जो आपका इंट्रोडक्शन दे दो, गो देयर एंड स्पीक अबाउट योरसेल्फ. my name is Darshan Patil and oh, I am explaining daily daily about my daily routine and a daily routine is I get up early in the morning. up Start from the daily, it's morning till night. Whatever you do, explain it. when come here and मैंने आपका इंट्रोडक्शन बोलो ना. इंट्रोडक्शन डेली रूटीन दोनों अलग अलग है. आपके बारे में बताओ. What's your name? What's your my father? name is This all. my name is Darshan Anil Patil. I am in my home. We are four members, and my father is doing he is a fashion designer, and my mother she is a sanitary inspector. Okay. About my sister is doing college and he is taking uh, take, taking education about BAMS doctor. He want to become a doctor, and about myself, I want to become a software engineer, and I want to crack CAT. About CAT, it is exam of 200 marks, and you want to crack that CAT and in CAT you will be get nice percent that after you can take admission into college. And about my father is taking contract and he is a fashion designer and in this That's all. that's all. Thanks. Sir, Sure. can I ask a question? Then you Okay. can ask. Yes. You said that you will crack a CAT. Yes. Which CAT? Which state? In which state you will crack CAT? Maharashtra because my 10th, 11th, 12th class is going on my college and school is going on Maharashtra. I am doing from Can you tell me the full form of CAT? You want to crack that exam, you should know about all the things. Basically, at least full form. I can I will take tomorrow. No, I you will tell that. Right now research only. If you want to go at CAT is a requirement, but what is CAT and what how the process of CAT? He doesn't know. Okay. Wait, clap. Thanks. You want to be better. Yes, sir. Clear? इसके लिए पढ़ना पड़ेगा, इंफॉर्मेशन लेनी पड़ेगी. Yes. चलो, ओके. अभी किसी को लेट हो रहा है, जाना है? अच्छा, जॉब की. चलो अभी कौन जा रहा है? रिया. यस गो. हाँ गो गो. पूरा प्रैक्टिस करके आना है. चलो कम. Go. Sir, कल हॉलीडे. कल आपकी क्लास तो किसी और की क्लास है. क्लास तो ले रहे थे. But not for you. Yes. Go. Let's start. Huh? Let's go. First you go there, then you think on which topic you have to speak. Go. First. कोई भी टॉपिक एक्सप्लेन करवा दिए. These, that, tenses, whatever.
First you go there, stand up, and take the duster, and wipe that, then you start a new topic which you want to explain. Actually, we go, whatever we go, the ladies is first. In our class, like gents are first. Today I explain about simple uh, present simple tense. Yeah. Uh, there are main three tenses are present tense, second one is past tense, Mm. and third one is future tense. Okay. Uh, every sentence have four subtenses. Uh, Right. like present, Mm. present simple tense, present continuous tense, present perfect tense, and present perfect continuous tense. Today I explain you about present simple tense, like present action is going daily in daily routine. Are example like I go temple every day. This action is going in your daily routine. Mm. So uh, So can you switch on and please make it clear AC on 21 pieces? Yes, yes, present simple formula like subject plus verb plus object and other words. okay. That's all. Okay, you speak some sentences regarding of the present simple. On the other, not right. Like I learn English daily. Mm. Or, I wake up at 6 o'clock yes. every morning. Mm. Yeah. That's it. देखो प्रैक्टिस तो क्लेफर का सबसे पहले आपको स्पीच का तो थोड़ा थोड़ा फियर है वो निकालना पड़ेगा और एक फ्लो बनाना पड़ेगा, ठीक है। और एक्सप्लेन आप जो कर रहे हो एक्सप्लेन करते में स्पीड थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी। वर्ड्स राइटिंग तो ठीक है, एक्सप्लेनेशन की जो स्पीड है बढ़ानी पड़ेगी। वो कैसे बढ़ेगी कि यू हैव टू प्रिपेयर इट। सीखना सही है, थोड़ा थोड़ा सेंटेंसेस बोलना सही है, बट जब हम प्रेजेंटेशन बन जाते हैं ना तभी हमारी स्पीड बढ़ती है, तभी हम एक फ्लुएंट स्पीकर बन पाते हैं। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट हमें रखना है कि स्टेज पर जब भी जाओगे तो प्रेजेंटेशन के अंदर मुझे 10 आउट ऑफ 8 या 9 अगर मार्क्स मिल रहे हैं देन माय इंग्लिश इज बेटर। समझ में आ रहा है? तो अभी आपका लेवल डाउन है, दैट यू हैव टू बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइम यू विल बेटर देन दिस।
Okay, sure. Huh? Majority English. Okay. Hello friends, good morning to all of you. Good morning. Today I am telling you about tenses. Today I will explain, not Today I tell. will explain tenses. Ah. So, there are three types of tenses. Number one, present. Second one, past tense. Third one, future tense. These are tenses, main tenses, and each one has lots of tenses. Lots of tenses is number one, continuous tense. Second one, simple. Loudly. Third one, perfect. And fourth, perfect continuous. Today I discuss about present tense. Present tense means which action is going on daily routine. And its formula is subject plus verb plus EIS plus object. That's another. Is another one. Can I remove this? Huh? Yes. First of all, you explain this all what you have written. What you have written. First of all, you explain all this. Then you read it. So these are tenses. There are three types of tenses: present tense, past tense, future tense. Each one has lots of tenses: continuous tense, simple tense, perfect, and perfect continuous. But today I discuss about present tense because the present tense is complete. Okay. Present tense is formula is subject plus verb plus object plus other verb. ठीक है. Explain only present continuous. Only All continuous. present continuous is which action is going now. It means
this is normalized. So left colors, verb, ing, plus object, plus object. And some examples is one is image is sorry, image is going to temple. We are going to, we are and next week one example. Yeah, you are taking Okay, that's it. ओके गुड क्लियर। सबसे पहले एक्साइटमेंट की कमी है, ठीक है ना। और ऐसा लग रहा है आप खुद ही आप देख रहे हो, समझाना टीचिंग के मैटर थोड़ा अलग होता है, प्रेजेंटेशन भी थोड़ा अलग हो, एक्साइटमेंट डालो और स्पीड बढ़ाओ थोड़ी। स्पीड बढ़ाना जरूरी है, बोर्ड राइटिंग ठीक है, स्पीड बढ़ाना बहुत जरूरी है और सबके ऊपर अटेंड होना जरूरी है, ठीक है ना। चलो तो नेट टू डू समथिंग, जो जो बताया जा रहा है इम्प्रूव करो, क्योंकि इम्प्रूवमेंट्स होना बहुत जरूरी है। प्रेजेंटेशन के लिए हम सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, अपने आप से बातें कर रहे हैं, लेकिन जब आप यहाँ पे कुछ टीचिंग करने आते हो तो आपके अंदर क्या है वो सब बाहर दिखाएगा, कि आपके पास नॉलेज कितना है वो बाहर निकलता है। तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट अपने आप को तभी समझो कि मैं फ्लुएंट टीचर कब हूँ, मैं फ्लुएंट अपने काम में कब हूँ, कि व्हेन आई एम द परफेक्ट इन प्रेजेंटेशन, जब मैं प्रेजेंटेशन में बहुत बढ़िया हूँ, ठीक है ना। वो चीज आपको समझना है। जब भी प्रेजेंटेशन आप देते हो, आपने इंग्लिश सिलेक्ट किया तो उस बीच में आप 10 से 15% आप हिंदी का भी प्रयोग कर सकते हो, सोच लेना है वहाँ पे। आपके सामने ऑडियंस टोटल ऑफ द इंग्लिश देन यू हैव टू स्पीक ओनली इंग्लिश, that is a mix people are there, some of the English also, some are Hindi also, Gujarati also, so you have to think that उस तरह से फिर आपको गुजराती ज्यादा लोग है तो आप हिंदी के जगह गुजराती का प्रयोग करो। So depend on you change your tone। जब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि what I got, जो वर्ड नहीं मिल रहा है इंग्लिश में, then you immediately change your language, you turn in the Hindi। immediately वर्ड आने के बाद तुरंत इंग्लिश में कन्वर्ट करें, तो किसी किससे क्या होगा, नोटिस कर पाएंगे। हाँ आपको जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे कि आपका इंग्लिश, कभी कभी आप स्टक हो जाते हो, वो स्टक ही नहीं, वो थिंक ही नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जब भी हम प्रेजेंटेशन करते हैं ना, रुक भी जाते हो ना, तो रुकते समय आपको क्या वो स्टाइल बना लेना है। किसी को लगना नहीं चाहिए कि आप रुक चुके हो, दैट्स बिकम लाइक योर स्टाइल, ठीक है ना। अगर लंगड़ाते हुए चल रहा है लेकिन वो स्टाइल के साथ चल रहा है, यार क्या बढ़िया स्टाइल में चल रहा है, तो उसकी फिजिकली हैंडीकैप नहीं दिखाई देगी, उसकी स्टाइल दिखाई देगी। वो चीज को आपकी कमजोरी को आपके स्टाइल में कन्वर्ट करो, बल्कि कमजोरी को आप, जो कमजोरी मतलब आपकी जो डिसेबिलिटी, उसको आप आपके डिसेबिलिटी में मत कन्वर्ट करो। समझ में आ रहा है वो चीज है। चलो तो आज के लिए हम यही पे स्टॉप करते हैं। मंडे अच्छी तरह से जो भी चल रहा है उसका रिविजन करो, प्रॉपरली माइंड में डालो, यूज करो। ओके, देन वी ऑल थिंक दिस। सो वर्ड्स पर खास करके फोकस रखो, बिकॉज़ वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस।